हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आज आप सभी का आज के इस नेट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंट जॉब अपडेट्स के बारे में, जिसमें मैं आज आपके सामने 3 नई जॉब अपडेट्स लेके आई हूँ फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज। द फर्स्ट इज फ्रॉम द जेनपैक्ट, जहाँ पर आपका काम होगा कस्टमर सपोर्ट का। They are hiring on the customer support role. The second is from again a MNC company, that is accenture. Accenture में your role will be of the HR operation, related to the HR operation. And the third is from virtusa, where I'm working. So here your role will be of Python developer. So if you have done courses related to the Python developer, so you definitely can apply in this. Okay. And in all these 3 openings freshers are eligible. ओके और जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए वो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आप उसको अगर मेट करते होंगे तो आप इनमें से जो भी आपको जॉब डिटेल्स आपको पसंद आ रही है तो उस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट यू नेवर मिस एनी जॉब अपडेट्स। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताती हूँ। ओके गाइज, सो फर्स्ट ओपनिंग इज़ फ्रॉम द जेनपैक्ट, दैट इज़ हायरिंग फॉर द कस्टमर सपोर्ट रोल। तो यहाँ पर आपका काम कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड होने वाला है। ओके, सो इफ़ यू आर अ फ्रेशर सो यू कैन अप्लाई इन दिस। ऑलराइट, और भी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है आपको। सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू कस्टमर क्वेरीज एंड कस्टमर कंसर्न, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डाटा कलेक्शन टू इनेबल रिकवरी ऑफ अकाउंट फॉर एंड यूजर, मेंटेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट प्रोसेस एंड पॉलिसीज। सो बेसिकली जो बेसिक काम होता है कस्टमर सपोर्ट का, यू हैव टू सॉल्व द क्वेरीज ऑफ कस्टमर्स और द क्लाइंट्स। तो आपका बेसिकली यही काम होने वाला है। रिस्पॉन्सिबल टू शोकेस प्रोवन वर्क एथिक विद एबिलिटी टू वर्क वेल both independently and within the context of the large collaborative environment. Okay, so ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन था ना। what qualification you need? graduation in any stream except technical and law। तो आपने कोई भी, अगर आप बीटेक हैं या फिर आपने एलएलबी किया है, so you cannot apply in this, क्योंकि मेंशन है एक्सेप्ट टेक्निकल एंड लॉ। उसके अलावा आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा हो सो यू कैन अप्लाई इन दिस। फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो यू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी इन बोथ द लैंग्वेजेस, एंड फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। ना प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन आपके पास फ्रेशर्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन कस्टमर सर्विस है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्टिव प्रूविंग स्किल्स, एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, दिस एंड इंग्लिश में फ्लुएंट होना, ये सारी चीज़ें तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका क्वालिफिकेशन होगा। इफ़ यू आर मीटिंग दिस क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इन दिस। ऑलराइट, सो टू अप्लाई इन दिस कोई भी ऐसा एज सच कोई ईमेल नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन द अप्लाई बटन ओवर देयर। ओके, आप अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप नौकरी से अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम हियर। ओके, सो आपने प्रोफाइल पहले से बना रखी होगी, सो यू कैन अप्लाई इन दिस, राइट। सो अभी दूसरी जॉब अपडेट के बारे की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फ्रॉम दी accenture. Alright, so the accenture is hiring on HR operations, HR service delivery new associate, their full name of this post is। Alright, so यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा एंड यू आर फ्रेशर इन दिस, सो यू कैन अप्लाई इन दिस। ऑलराइट, 1 मिनट। यस, तो अभी एसेंचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी हुई है। Now what they are looking for into you, so you have a strong client relationship, handle dispute, manage multiple stakeholders, meet deadlines, perform under pressure। So
बेसिकली आपको आपको कैसा होना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो कि हाउ यू हैव टू बिहेव व्हाइल यू आर वर्किंग इन एसेंचर, दैट इज अबाउट दिस. नाउ roles and responsibility, what you have actually do in this role. You are required to do analysis and solving of lower complexity problems. Day to day interaction is with the peers within Accenture before updating supervisors. आपका इंटरेक्शंस होगा आपके कलीग से, पीयर ग्रुप से. इन दिस रोल यू हैव लिमिटेड एक्सपोजर विद क्लाइंट और एसेंशियल मैनेजमेंट. सी आपका यहाँ पर क्लाइंट से एक्सपोजर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ऑफ अ लिमिटेड काइंड. आपको ज़्यादा उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली यू हैव टू डू इन लाइक ऑफिस वर्क, राइट. ठीक है. Now you will be given moderate level instruction on daily work task and detailed instruction on new assignment. Okay. तो जो भी आपका डेली टास्क होगा उसके बारे में आपको पहले से बता दिया जाएगा, राइट. और डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से प्रोवाइड कर दी जाएंगी, उनके गाइडलाइंस कि आपको क्या करना है बेसिकली ऑन दिस स्पेसिफिक असाइनमेंट, राइट. सो ओके, प्लीज़ ऑल्सो नोट दैट दिस रोल में रिक्वायर यू टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट. तो रोटेशनल शिफ्ट हो सकती है, जनरल सी बात है. अब जब भी हम कभी किसी कंपनी में अप्लाई करें तो आजकल सब जगह जनरल शिफ्ट बहुत अब बहुत कम हो गई है, बट वी हैव टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, राइट. सो या, any graduation can apply in this. So for this you have to click on the apply button, and this will take you to the another page of Accenture where you have to sign up and then fill up the form, everything. all right. तो उसके लिए पहले अगर आपने कभी इस पे अकाउंट एसेंचर पे नहीं बनाया है, सो यू हैव टू मेक इट एंड स्टार्ट योर एप्लीकेशन. दिस यू कैन डू ऑन योर ओन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. नाउ द लास्ट इज फ्रॉम द virtusa. सो here you have to be a Python developer. okay. so for this skills required, इसके लिए आपको क्या चाहिए? Python plus database developer, right. sorry. And yeah, qualification should be bachelor's degree in computer science, engineering or related field, or equivalent professional experience. bachelor degree आपके पास होना चाहिए in computer science. For example, I think it's BCA, yeah, if I'm not wrong, it may be, yeah. so उसके लिए ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, and you must know the Python language. I don't know what it is, but yeah, Python is, I think, language, yeah. So yes, SQL Server, Oracle database, Python, JavaScript, HTML, Windows scripting. okay, so experience with data scrubbing, migration, cleansing and analysis. तो आपके पास अगर इसका प्रायर एक्सपीरियंस भी है, देन इट्स वेल एंड गुड. आप इसमें तब भी अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड टू द स्क्रबिंग, माइग्रेशन एंड क्लेंजिंग. ओके, you can read about what virtusa is doing right now. your आपका जो लोकेशन रहेगा काम करने के लिए, दैट विल बी इन पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया. तो अगर आप पुणे में जॉब करना चाहते हैं या रिलोकेट होना चाहते हैं वहाँ पर, ओके, सो यू कैन अप्लाई इन दिस. नाउ योर स्किल शुड बी, जैसे कि मैंने आपको बताई, APA Python. ऑलराइट. सो या, all these things are given. No travel is there. ओके, सो आपको अप्लाई करने के लिए you have to click on this apply button right over here on the top. just click on that. you have to make sure to make your account in the in this platform, and then you can apply. so you have to fetch all these things and then you can apply in this, right. so this is how you can apply in all these three job openings. okay, ओके, सो ये तीनों जॉब डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं. तो इन विच एवर यू फील लाइक यू आर मोर एलिजिबल टू इट, सो यू कैन अप्लाई इन दैट. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन कनेक्ट विद मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन कमेंट डाउन देयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.